Hello students, good evening to all. पिला माने वॉइस क्लियर अछि कंफर्म करिवे टिके ओके ऑल क्लियर स्टार्ट करिबा पिला माने आज एग्जाम केमती हेची पेपर 1 रा हमें ओटे डिस्कशन वीडियो ओटे करथिले एबे पेपर 2 रा एटा टोटल एनालिसिस कर देबा देखंतु सीडीपी रो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन देइची द median for the given number is देइची केतेटा नंबर देखंतु 21 22 26 27 28 और 26 पिला माने आपण माने गोटे सेशन ने कहिथिली कि मीडियन रो फार्मूला केमिति आपण माने बाहर करिवे इवन थिले कोन करिवे ऑड थिले कोन करिवे तो सेही अनुसार एठी देखंतु आपण माने एठी सजै देबे असेंडिंग ऑर्डर रे सजै देबे माने फर्स्ट 21 देन 22 23 क्लियर देन सॉरी 26 देन 26 28 28 27 28 देन देखंतु एठी जो आपनकर रहिला देखंतु आपनकर जो 26 प्लस 26 सॉरी पिला माने 26 प्लस 26 ए दिटा मझरे रहिबो डिवाइडेड बाय 2 कर देबे एटा आपनकर आसी जीवो केते 52 डिवाइडेड बाय 2 क्लियर गोटे सेकंड पिला माने एटा काई ठीक रे देखंतु 26 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2 करिवे एटा आपनकर 26 प्लस 26 हे गला 52 डिवाइडेड बाय 2 एटा आपनकर हे जिवो केते 26 तो हमर आंसर हे जिवो केते ऑप्शन सी 26 हे जिवो हमर राइट आंसर क्लियर देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु which one among the following is audio visual aid क्लियर एठी कहिछि ऑडियो विजुअल एड या भितरो कोटा ब्लैक बोर्ड देइछि रेडियो देइछि टेलीविजन देइछि पिक्चर कार्ड देइछि कोन हबो हमर ऑडियो विजुअल एड कोटा हबो ब्लैक बोर्ड तो केवल विजुअल एड रेडियो होछि केवल ऑडियो टेलीविजन एटा हमर आंसर कोन हे जिवो टेलीविजन हे जिवो हमर राइट आंसर क्लियर देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर देखंतु which of the following is not an example of emotion या भितरो कोटा गोटे इमोशन रो गोटे एग्जांपल नुहे देछि एंगर फियर फिजिकल एक्टिविटी देन देछि कोन लव एंगर हैला फियर हैला लव हैला ए सब होछि इमोशन रो गोटे एग्जांपल आंसर हे जिवो कोन फिजिकल एक्टिविटी क्लियर पिला माने हमर के आंसर हे जिवो ऑप्शन सी क्लियर क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु which period is known as stage of stress and strain प्रीवियस क्लास रे पर्टिकुलर ए क्वेश्चन हमें डिस्कशन करथिले हां कि ना एटा हिजबो ऑप्शन ए एडोलेसेंस यस और नो ऑप्शन ए हिजबो हमर करेक्ट आंसर एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु कोन देइछि in late childhood
In late childhood, most of the children look taller and thinner because लेट चाइल्डहुड रे पिला माने जो टलर माने लंबा देखा जांती माने डेंगा आ पतला देखा जांती काहे की देखा जांती कोन देछि ऑप्शन देखंतु दे डोंट प्रिफर टू टेक बैलेंस डाइट they are exposed to various kinds of disease hands and legs grow stronger and longer as compared to toes then कोन कहला excessive increase in height makes them naturally thin कोन हे जब आंसर कोन करछन्ते अपन माने आंसर यस पिला माने आंसर हे जब एठी हमरो सी नो डाउट माने एठी देखंतु ओडिया रे लिखा हेची शरीरर गंडी तुलन रे हाथ ओ गोड़ द्रुत बेगरे बड़ ओ शक्त हेबाको लागे एटा डेफिनेटली करेक्ट अछि ये ऑप्शन टा देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु yes which statement is not correct about development सेम क्वेश्चन हमें करिचे कि नहीं बहुत गुडे क्वेश्चन हमर डायरेक्ट आसी जाई छै हमें जो सब एमसीक्यू सेशन में डिस्कशन करथिले बहुत गुडे क्वेश्चन हमर डायरेक्ट आसी जाई छी या भितर कोटा डेवलपमेंट रो गोटे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे म अपन मान को बारंबार कहितली नॉट रो क्वेश्चन आसीबो ताको अपन नेग्लेक्ट करिवेनी ऑप्शन ए देई छी बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर influence development option b dela initially development is not rapid development is a continuous process development is unique for each individual development is a continuous process absolutely correct answer development is unique for each individual eta madhya correct achi individual wise development kaharo kette development hobo seta depend करे individual upare both genetic and environmental factor influence development एटा मध्य ठीक अछि त हमर एठी नॉट पचारि छी हमर initially development is not rapid एटा हे जिवम हमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु which one of the following is an example of meaningful learning गोटे meaningful learning रो कोटा या भितर गोटे एग्जांपल ऑप्शन ए देला remembering a poem by repeated practice repeating mathematical formulas then कहला कोन ऑप्शन सी रे elaborating an idea ऑप्शन डी कहला imitating the teacher to draw a geometrical shape कोन हबो आंसर is an example of meaningful learning एठी कथा कहि छी remembering a poem by repeated practice एटा repeated practice कथा कहि छी repeat word टा एठी हमरो हबनी practice टा भलो जिंस repeating mathematical formula elaborating an idea एटा हे छी हमरो correct answer clear meaningful learning कथा जते बेले कहि छी आमे हम आइडिया को केमिति एलाबोरेट करिबा को वे रे हम एलाबोरेट करिबा इमिटेट करिबा टीचर को केवल एटा हबो नहीं रिपीटिंग मैथमेटिकल फार्मूला तो गोटे सिखिले ताको बारंबार रिपीट करिया दरकार नहीं रिपीट वर्ड टा हो जोटे नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी म आपण मानको बारंबार कहि छी देन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु कोन कहिला What is the first step of curriculum development? या भितर कोटा first step curriculum development रो कोटा first step कोन हो आंसर देखंतु creating the syllabus हबो नहीं sorry selection of instructional materials शिक्षादान सामग्री रो चयन एटा मध्ये फास्ट नुहे evaluation of effective of the curriculum पाठ्यक्रम रो फलप्रदता मूल्यांकन इवैल्यूएशन टा जमा भी फास्ट नुहे इवैल्यूएशन सबुठु एंड रे आसे देन कहला असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स द स्टूडेंट आमे शिक्षार्थी माने को टाइप रो शिक्षण को आवश्यक करूचंती सेटा आमे फास्ट अनुध्यान करिबा माने निरूपण करिबा असेसमेंट माने असेसमेंट फास्ट हमें करिबा इवैल्यूएशन ता हमर सबुठु एंड रे आसी थाई म आपण मानन कहितली
सिलेबस क्रिएट करबा हला सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ए सब किछि हबो नाही क्लियर देन जिबा क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु व्हाट इज द मीन ऑफ मीन पचारिछि 21 22 23 24 27 25 मीन रो फार्मूला कोन आपण ई सब गुडा कर सब नंबर को ऐड कर देबे मिसई देबे डिवाइडेड बाय जेतेटा नंबर अछि केतेटा अछि 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 माने हमरो सब गुडा को मिसई देले जेति की हबो डिवाइडेड बाय 6 आपण कर देबे आंसर हे जिवो 23.5 क्लियर पिला माने एटा आपण निजे कर देबे देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु यस देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहिला when a test measures what is intended to measure it says about dash of the test कोन हो आंसर गोटे कहिला कोन जेते बेले गोटे परीक्षण जहा मापिबा को चाहूची ताहा ही मापे ताहा को परीक्षण रो कोन कह जाय माने से मेजर करि पारुची बारंबार मो क्लास रे कहिची कंसिस्टेंसी वर्ड आसीबो माने आपण माने रिलायबिलिटी करिवे मेजरमेंट रो कथा आसीबो माने एटा हे जिवो हमर कोन वैलिडिटी हे जिवो हमर आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस रो कोटा गोटे स्टेटमेंट ए चारटा भितर कोटा ठीक अछि ऑप्शन ए कहिला लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द टीचिंग क्वालिटी ऑफ द टीचर लर्निंग डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम द इमीडिएट environment learning depends upon the social and cultural context of the child learning depends upon interaction between peers किछि देइछि कि हां peers teachers and parents interaction between peers teachers and parents कथा कहिछि देखंतो इति कोन हबो आंसर 11 रो आंसर हे जिवो कोन एठी कहिछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस जे कोनसी लर्निंग प्रोसेस रो आमे टीचिंग क्वालिटी माने गोटे टीचर रो टीचिंग क्वालिटी टाको आमे फास्ट देखिबा क्लियर ऑप्शन ए हे जिवो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा एटा पिला माने हमें सेट बी रो क्वेश्चन रे देखुचे सब सेट रो त सेम क्वेश्चन अछि बस नंबरिंग चेंज हेतिबो आपण माने से अनुसार मिसई देबे देखंतु लेटर चाइल्डहुड फेज इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोन कहिला लेटर चाइल्डहुड फेज कथा कहिची रिलेटेड टू को स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस ऊपर आपण माने पढे कि जिबे मु काली रो क्लास रे ही बारंबार कहितली एई क्वेश्चन ना आंसर हमर हे जिवो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लेटर चाइल्डहुड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सेम जिंसो ए स्टेज रे ही कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे हमरो लेटर चाइल्डहुड ता आसुची कंक्रीट ऑपरेशनल ता केते 7 टू 12 एज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज असेस्ड बाय एन अचीवमेंट टेस्ट गोटे अचीवमेंट टेस्ट माने उपलब्धि परीक्षण जोटा हमें कहूचे अचीवमेंट टेस्ट रो कोटा ठीक हबो लर्निंग डिफिकल्टी हमर डायग्नोसिस रे आसुची एंट्री नॉलेज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन रे आसुची एटीट्यूडिनल चेंज हमर एटीट्यूड टेस्ट कोटे अछि सेथिरे आसुची मास्टरी ओवर द लर्निंग एटा हमर हे जिवो मास्टरी लर्निंग रे हे जिवो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु यस रिलायबिलिटी देखंतु वैलिडिटी कथा क्वेश्चन न पचार देला कि कोटा हबो बोली वैलिडिटी कोटे आंसर हे गला देन रिलायबिलिटी कथा मध्य पचारिची रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी टेस्ट स्कोर इनकंसिस्टेंसी टेस्ट स्कोर हबनी
ट्रुथफुलनेस हबनी, प्रेडिक्टेबिलिटी हबनी। बारंबार कहिछि कंसिस्टेंसी रो वर्ड आसीबो माने आपण रिलायबिलिटी कथा बुझिबे। क्लियर? 14 ए हे जिवो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु, which of the following statement is related to principle of development? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टा को कोटा को बुझौछि? डेवलपमेंट इज ओनली क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट टा केवल क्वालिटेटिव, भूल अछि। डेवलपमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट केबे भी क्वांटिटेटिव नुहे, क्वांटिटेटिव हमरो ग्रोथ को कहा जाय। डेवलपमेंट इज ऑलवेज क्रॉस सेक्शनल, एटा मध्य भूल अछि। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एटा ठीक अछि। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर पिला माने? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु। यस, एठी पचारछि पियर्स लर्निंग उपरे, which of the following is an example of peer learning? Reading a book, reading the book in the class, listening to the teacher in the classroom, doing assignment with help of the teacher, group discussion with the help of map। कौन है जो आंसर? रीडिंग द बुक केवल गोटे बही पढ़िबे, एटा भूल हबो आंसर। माने पियर लर्निंग कथा कहिछि, माने सांग माने जो काम रे हेल्प करथिबे सेही कथा कहिछि। लिसनिंग टू द टीचर इन द क्लासरूम, केवल टीचर जहा कहउछन ताको सुनिबो, एटा भूल अछि। डूइंग असाइनमेंट विथ द हेल्प ऑफ द टीचर, एडी जदी पियर्स दे थांदा एटा हमरो करेक्ट हेइ थांदा, एटा भूल हबो। ग्रुप डिस्कशन विथ हेल्प ऑफ मैप, ग्रुप डिस्कशन कथा आसुची माने किछि जण पिलांको नै कि गोटे ग्रुप हेइथिबो, हां कि ना? सेइटार हमरो कोन आसे जिवो? पियर लर्निंग आसे जिवो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु। In which stage does the child start to know about permanence of object? Object permanence टा को स्टेज रे आसे थाए? स्टेज रिगार्डिंग आपण एठी दीटा क्वेश्चन पाइलेनी। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमरो सेंसरी मोटर स्टेज रे आसे थाए, हां कि ना? माने इन्फेंसी स्टेज रे, जोटा कि हमरो 0 टू केते 2 ईयर, हां कि ना? क्लियर पिला माने? इन्फेंसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखंतु। Which of the following is more appropriate in case in inclusive education? देखंतु inclusive education ऊपर क्वेश्चन पढिबो कहितली पढिची। Provision of special school for disabled children, accepting difference and diversity and teaching all students in one school, focusing more on child's weakness rather than abilities, teaching disabled children in a separate classroom of a general school। कौन हम आंसर? इंक्लूसिव एजुकेशन माने सबो स्टूडेंट माने समान। तो हमर आंसर हे जिवो कोन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्टिंग डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मेंटेन हबो। टीचिंग ऑल स्टूडेंट इन वन स्कूल, गोटे स्कूल ले सबो स्टूडेंट माने पढिबे। इंक्लूसिव क्लासरूम हमें काहा कहितले? हम आपण मानु कहितली गोटे क्लासरूम रे सबो प्रकार रो स्टूडेंट माने रहिबे, सेटा को हमें इंक्लूसिव क्लासरूम बोली कहिबा। देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहिला? Which tool is not used for observation? ओके, अनेक्टोल रिकॉर्ड टा हमर ऑब्जर्वेशन यूज हुए। रेटिंग स्केल हम ऑब्जर्वेशन करी कि धरो 1 to 5 हैला, किमा जति कि हमको रेट दबार अछि, हमें ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करी कि रेटिंग स्केल करथाउ। चेकलिस्ट हम ऑब्जर्व करी थाउ। क्वेश्चनरी एथरे किछि भी आसुनी। क्वेश्चनरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखंतु। What is the purpose of diagnostic evaluation? बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने पढिथिला, किछि भी कंफ्यूज होबार नाही। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कथा कहिछि टू आइडेंटिफाई लर्नर्स स्पेसिफिक वीकनेस। आंसर हे जिवो हमर एटा, आ किछि देखिबा भी दरकार नै। देखन तापर मु कहि दोछि टू नो ओवरऑल लर्निंग अचीवमेंट ऑफ लर्नर, अचीवमेंट टेस्ट रेटा पळे आछि।
To know the effective functioning of group एटा मध्य आसुनी स्कूल आसुनी to provide pass certificate एटा मध्य होउनी एटा प्रोग्रेस कार्ड कथा कहि जाउची clear हमर ऑप्शन A is the correct answer क्वेश्चन नंबर 21 को जिबा yes देखंतु which one among the following is a hindrance to quality teaching hindrance माने कोन कहिछि बाधक माने रोके दउछि को क्वालिटी टा देखंतु availability of sufficient TLM and their use of alternate learning experience single grade with a large number of students implementation of continuous and comprehensive evaluation कोन हबा आंसर एटी कहिला availability of sufficient TLM and their use sufficient TLM हैला तार use हैला available थिबो एटा हबो नाही use of alternate learning experience एटा मध्य हबो नाही single grade with a large number of student एटा हे जो हमर correct answer implementation of continuous and comprehensive evaluation एटा हमर हबो नाही hindrance कथा कहिछि माने हमर ऑप्शन सी हे जिवो correct answer continuous and comprehensive evaluation CC कथा पचारिला help to modify the method of teaching reduce learning time for the learners increase the workload of teacher increases the examination pressure on learners कोन हबा आंसर help करिवो एटा कोन modify the method क्वेश्चन नंबर 23 देखंतु Name of the capital of Odisha is dash एटा को टाइप रो क्वेश्चन completion type में जदि लिखि दबा गोटे वर्ड एटा कंप्लीट हे जिवो clear then देखंतु learning have any significant influence over the learning each another situation is called गोटे एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ अन्य एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ ऊपर कोनोसी विशेष प्रभाव पकाई न थाए ताइबा पॉजिटिव पकेथिले एटा पॉजिटिव हेइ थांता जदि नेगेटिव इंपैक्ट पके थांता नेगेटिव हेइ थांता किछि भी पकेलानी माने एटा जीरो ट्रांसफर हे जिवो देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 25 को जिबा which one among the following is characteristic of creative thinking रो कोटा logical thinking solving problem by arranging facts divergent thinking analytical thinking divergent thinking हे जिवो हमर एठी आंसर या भितरे ए सब गुडा पळे आछी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which of the following is not a child centered approach कोटा गोटे child centered approach नुहे not पचारिची project method lecture method experiment method problem solving method ए तीनटा जाको child centered lecture method टा हे जो हमर teacher centered clear next question जिबा question number 27 पाखु जिबा multiple intelligence theory was propounded by multiple intelligence theory हमरो गार्डनर देइथिले क्लियर पिला माने हमरो गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देइथिले which of the following is the most appropriate co-curricular activity to promote creativity storytelling newspaper reading library reading cross and puzzle कोन हबा आंसर co-curricular activity to promote creativity कथा कहिछि co-curricular activity कथा कहिछि माने एठी हमरो कोन हबो स्टोरी टेलिंग कथा हबो देखंतु पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा पिला माने जो माने एपर्यंत साईकृष्णा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती
सब्सक्राइब कर दियंतु आपनकर आगु को जो ओएसटीटी एग्जाम आसुची तार सबो क्लास हमरो साईकृष्ण इंस्टीट्यूट रे ही हबो आपण माने क्लास देखिबे देखंतु ओटीटी रे बहुत गुडे क्वेश्चन एथरे आपण माने डायरेक्ट क्वेश्चन आपण माने पाइचंती हम क्लास रु तो से अनुसार ओएसटीटी पई मध्ये हमें पूरा रेगुलर बेसिस रे हमरो क्लास हबो बहुत बेनिफिट आपण माने पाइबे सब्सक्राइब करंतु सेशन को लाइक करंतु शेयर कर देबे संग माने जो माने ओएसटीटी एग्जाम दउथिबे देखंतु एई सेशन को आपण माने शेयर करबे जो माने ओटीटी एग्जाम दैचंती आ कमेंट सेशन में जणाइबे कि कहार केतेरा ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 29 देखंतु with which of the learning theory B.F. Skinner का कथा पचारिछि is associated B.F. Skinner को learning theory ऊपर associated operant conditioning trial and error हमर थॉर्नडाइक देथिले क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव देथिले इनसाइटफुल लर्निंग हमर कोहलर देथिले आंसर हिजिबो operant conditioning is the correct answer then देखंतु 30 रा आंसर कोन हबो who is the propounder of the theory of psychosocial development रो propounder किए क्लास रे कुहा हिची एरिक एरिक्सन होउचंती साइकोसोशियल थ्योरी रो प्रोपाउंडर एरिक एरिक्सन हमरो साइकोसोशियल थ्योरी देइथिले क्लियर पिला माने 30 टा क्वेश्चन हम माने डिस्कशन कर देले तो कमेंट सेक्शन में आपण माने जणाइबे कहार केतेरा ठीक अछि आ एग्जाम केमिति हेछि आपण माने जणाइबे किंतु आपण माने बहुत माने पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपण माने हम सेशन नो पाइचंदी जो माने एमसीक्यू सेशन करथिबे सब गुडा पूरा 5-6 टा क्वेश्चन एठी डायरेक्ट आपण माने पाइ जाइथिबे ठीक अछि सेशन चैनल को सब्सक्राइब करिवे साईकृष्ण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवे सेशन को लाइक करंतु शेयर करंतु जो माने ओटीटी एग्जाम देइचंदी से माने देखि देबे कहार केते ठीक अछि केते भूल अछि देन सब्सक्राइब करके रखंतु हमर ओएसटीटी क्लास चाह भी हबो आपण मानंगु क्लास रो अपडेट मिलि जिवो टेलीग्राम चैनल ले मध्ये आपण माने जॉइन हेई परिबे साईकृष्ण इंस्टीट्यूट टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेई जानतो केते बेले क्लास रहिबो केते बेले को इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपण आसीबो से सब रो अपडेट आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रो पाइ जिवे क्लियर पिला माने थैंक यू सो मच गुड नाइट टू ऑल नमस्कार।